So now you can see the screen. Yes, Manan. Okay, so now you can see the screen. and स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि there is a beam, a section of beam. તમને દેખાતું હોય છે એક બીમ નો સેક્શન છે અહીંયા, બરાબર? આ બીમ સેક્શન જે છે એ શું કઈ રીતે દેખાડેલો છે તો કે બીમ સેક્શન ઉપરનો આપણે સ્ટ્રેન ને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ અને જોઈએ છે શું છે. તો એક અહીંયા તમને નીચે બીમ દેખાય છે. आप एक बीम को ऑब्जर्व कर सकते हो इधर. ये बीम बिफोर बेंडिंग है और उसके बाद हम विथ बेंडिंग इसको देखेंगे. लेकिन इनिशियली इस बीम के अंदर हमने क्या किया है वो देखेंगे. इनिशियली आ बीम के अंदर આપણે શું કર્યું છે ઈ જોઈએ છે. આ બીમ નો ક્રોસ સેક્શન છે સામેની બાજુથી. આ बीम નો क्रॉस सेक्शन है सामेनी बाजू से. ये बीम का क्रॉस सेक्शन है जो आपको आगे से दिख रहा है. दिस इज अ फ्रंट व्यू, राइट? This is your front view of beam. That means cross section of beam. And this is a beam before bending and stress diagram. Right? Now considering a PQ at a distance y from the neutral axis. That means हम एक स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं. આપણે એક સ્ટ્રિપ ને અહીંયા આ પોર્શન ની અંદર દાણા કરી છે જે PQ તમને અહીંયા દેખાય છે. જો આ P અને Q તમને અહીંયા દેખાય છે. આ સ્ટ્રીપ ને આપણે ધારી છે. વી હેવ કન્સિડર્ડ ધીસ કે ઈ ન્યુટ્રલ एक्सिस થી क्या है तो कि y डिस्टेंस ऊपर है. हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसको कंसीडर क्यों किया? व्हाई वी हैव डन दिस? बिकॉज़ कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्लेन के अंदर कुछ बेंडिंग की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है उसको जानना है तो एंटायर सेक्शन को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन आइदर टेक अ डिफरेंशिएशन. So this is a differential thing and then you can integrate entire thing. तो आपका बीम जो है वो पूरे का पूरा मिल जाएगा. बेंडिंग कितना होगा. कोई પણ એક સ્ટ્રીપ લ્યો કે સ્ટ્રીપ જે છે એ તો ડિફરન્શિએટ પાર્ટ છે એને ઇન્ટિગ્રેટ કરવો એટલે તમને આખા આખાનું મળી જાય. because we have assumption. આપણી પાસે એક assumption છે. શું છે? કે our beam is homogeneous and isotropic. What does that mean? That means કે આખા બીમ ની અંદર મટીરીયલ એક સરખું છે અને એના શેપ જે છે એ એન્ટાયરલી સેમ છે. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી એની એન્ટાયરલી સેમ છે અને એનું મટીરીયલિસ્ટિક પ્રોपर्टी પણ एंटायरली सेम है. इसका मतलब ये है इसका मटीरियल प्रॉपर्टी भी जो है वो कंटीन्यूअसली सेम है और उसका जो प्रॉपर्टी है डायमेंशनल प्रॉपर्टी वो भी सेम है. तो एक स्ट्रिप के लिए जो भी मिलेगा वही पूरे बीम के लिए मिलेगा, राइट? तो आफ्टर बेंडिंग layer PQ is compressed to P dash Q dash, right? अभी ये P dash Q dash बेंडिंग के बाद हम देखते हैं तो where it is ये नीचे का फिगर आएगा आफ्टर बेंडिंग, राइट? आफ्टर बेंडिंग ये P जो है वो P dash हो गया, Q जो है वो Q dash हो गया क्योंकि कुछ डिफरेंस हुआ होगा इसके अंदर. See this P became P dash and this Q became Q dash. શેના માટે? તો કે આની અંદર કંઈક ફેરફાર થયો હશે, રાઈટ? હવે આગળ જોઈએ આપણે. Now if there is a compression, right? Upper layer is compressed. આ લેયર જે છે એ કમ્પ્રેસ થયું. તો કમ્પ્રેશન કોઈ પણ વસ્તુમાં થાય તો લેન્થમાં શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય? ડિક્રીઝ. If any material is compressed, its length will change. And what will be the change? It will decrease. किसी भी मटेरियल को आप अगर दबाओगे तो उसका जो लेंथ होगा वो कम होगा, राइट? तो डेल्टा L that means a change in length is equal to PQ was the initial length. PQ was your initial length and then what I did minus P dash Q dash, then you will get what is the change. P અને Q તમારો initial length હતી माइनस P dash Q dash તમે કરો તો તમારા આખી લેન્થ માં ચેન્જ કેટલો થયો એ તમને ખબર પડશે. गॉट इट? सभी को पता चल गया ये यहाँ तक? ओके. तो अगर हम इसके अंदर स्ट्रेन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहता है? यस एग्जैक्टली द चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल को मैंने इधर भी ऐसे ही लिख दिया है, राइट?
there is a delta L over there. And what is this original length? Original length उसका क्या है? तो original length is P and Q. So delta L को जहां पर हमने ऊपर फाइंड आउट किया यहाँ से, राइट, और यहाँ पर उसको हमने पुट ऑन किया P dash P minus Q minus P dash Q dash upon PQ because it was an original length. Right, this is your equation number 1. Now for this, when you go with the geometry, let's see this after bending portion, right? आफ्टर बेंडिंग पोर्शन के अंदर हमें क्या दिखाया कि बेंडिंग करते हैं तो एक कर्वेचर फॉर्म होता है, राइट? किसी भी चीज को हम अगर ऐसे बेंड करते हैं तो ये कर्वेचर फॉर्म हो, उस कर्वेचर को हम डायरेक्टली लेंगे तो इसका क्या मिलेगा? हमें सर्कल का एक पार्ट मिलेगा। कोई भी चीज अगर बेंड होती है तो वो बेंड होने के बाद पूरा एक सर्कल तो क्रिएट कर ही सकते हैं अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो। अगर जो આપણે એને एक्सटेंड કરીએ તો ये એક સર્કલ પૂરું કરે। તો એ સર્કલનું એક ઓરિજિન આપણે અહીંયા નક્કી કર્યું અને એ ઓરિજિન ભેગું આપણે શું કર્યું? એક એના બે અક્ષ લઈ લીધા અને આ જે કીધું એ એનું રેડિયસ કીધું। ક્યાં સુધી? તો કે ન્યુટ્રલ એક્સિસ સુધી। So that is your radius of curvature, right? That is your radius of curvature. Which curvature? ये radius of curvature हो गया आपका, लेकिन कौन सा curvature करा? Radius of curvature આ જે થઈ ગયું આ તમારું radius of curvature થયું r. But radius કેનું છે? ઈ curvature radius એટલે it is a radius which is created due to the bending of a beam, right? वो एक रेडियस है जो बेंडिंग बीम का हुआ तो उसके ओरिजिन से लेकर कहां तक का है? तो इट्स न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस, राइट? तो अगर हम अभी ज्योमेट्री को देखेंगे, राइट? नाउ लेट्स सी विथ अ ज्योमेट्री। P dash Q, that means this P dash Q dash upon R dash S dash, this is a ratio, nothing else, बराबर? तो ये रेशियो कोना बराबर है? तो के r minus y, where is r? This is r, that is y, this is y, that means r minus y, and then what will be this? r, बराबर है? r minus y and r, this is a mathematical geometry, nothing else. इसका मतलब क्या है? हम ये जो सेक्शन है इसका मतलब क्या है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का रेशियो इज इक्वल टू ये सेक्शन का रेशियो, राइट? नथिंग एल्स। द रेशियो ऑफ दिस सेक्शन बाय द रेशियो ऑफ दिस सेक्शन। नाउ व्हाट इज द रेशियो? P dash Q dash R dash, sorry, P dash S dash 170. This is P dash Q dash, that means P dash Q dash, and what it is? R dash S dash, right? The length at this layer and the length at which place? At a neutral axis, right? Then what it is? The length up till the neutral axis minus the length up till this layer, right? Upon the length of up till this layer. એટલે આ લેયર નો આટલાનો રેશિયો, આ આટલાનો રેશિયો, એટલે મતલબ ઊભું અને આડાનો રેશિયો છે। તો અહીંયા વેલ્યુ પુટ ઓન કરી આપણે, બરાબર? નાउ वी हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। दोनों बाजू हमने 1 को ऐड किया, माइनस किया, वैसे दोनों बाजू 1 1 को ले लिया। इसको अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो ये जो आर एस है, ये जो आर एस है, आर डैश एस डैश है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एलसीएम बचेगा। तो आर डैश एस डैश जे છે ઈ 1 ભેગો મલ્ટીપ્લાય થશે અને આર જે છે ઈ પણ 1 ભેગો મલ્ટીપ્લાય થશે અહીંયા। એટલે બચશે શું? આવી રીતની એક ફોર્મ્યુલા બનશે, રાઈટ? r dash s dash minus p dash q dash upon r dash s dash, because it will be the LCM now, upon is equal to r minus r plus y upon r, that means बचा क्या इधर? r upon y upon r, बचा क्या इसके अंदर? r upon y, क्योंकि प्लस माइनस r जो है
प्लस आर माइनस आर, दैट विल बी कैंसिल। यहां पर प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बट ये जो है वो न्यूट्रल लेयर है। व्हाट इज द न्यूट्रल लेयर? आर डैश इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। वो कैसे हुआ देखते हैं। यस, हाँ, ओके। तो नाउ लेट्स सी वेयर इज आर एंड एस। तो आर एंड एस जो है वो इधर नहीं है, वो किधर है? बिफोर बेंडिंग आपको मिलेगा वो आर एंड एस। तो वो कहां पर है? दिस इज योर न्यूट्रल लेयर, राइट। आ आर અને એસ ક્યાં છે? તમારા ન્યુટ્રલ લેયર ઉપર। ન્યુટ્રલ લેયર શું કામ છે? કારણ કે ન્યુટ્રલ લેયર જે છે ઈ બિફોર બેન્ડિંગ અને આફ્ટર બેન્ડિંગ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એવું આપણે એઝમ્પશન પહેલા જ લીધું છે, રાઈટ। આની પહેલા જ્યારે એઝમ્પશન ભણાવ્યા ત્યારે, ઓકે। તો પછી આગળ શું છે? તો કે બીજું કોણ છે? આર અને એસ। આર અને એસ જોઈ લીધું, હવે પી અને ક્યુ જોઈએ છે આપણે। આર અને એસ જોઈ લીધું, હવે આ પી અને ક્યુ જોઈએ છે આપણે। તો પી અને ક્યુ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ન્યુટ્રલ લેયર ને અપડેટ કરેલું જોઈએ છે કે એને આપણે વાય ડિસ્ટન્સ ઉપર જોવું છે, એટલે એને પી અને ક્યુ ને ન્યુટ્રલ લેયર તરીકે લીધું અને આર અને આર ડેશ એસ ડેશ ને આપણે પાછું લેશું, राइट। आर डैश एस डैश को फिर से लेंगे हम। दिस इज योर आर डैश एस डैश, अगेन योर न्यूट्रल लेयर। यहाँ पर आर डैश एस डैश, दैट्स योर न्यूट्रल लेयर, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, इसको जो है हम सिर्फ नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो 1 को अगर देखते हैं, इक्वेशन 1 को, राइट। तो इक्वेशन 1 क्या था? पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? स्ट्रेन है, राइट। अगर हम नीचे जाएंगे तो वो क्या मिला हमें? वी गॉट अ सेम थिंग, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। क्यू क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल लेयर जो है उसको हमने इज इक्वल टू लिया है इसलिए, वरना ऊपर ऐसा नहीं था। अँ ऊपर एवं नहीं, अँ चेंज शू काम थयुं? कारण के न्यूट्रल लेयर जे छे एने आपणे केवुं छे के न्यूट्रल लेयर बधाय सरखा ज छे। शू काम? इट विल रिमेन एज इट इज बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट वाज योर अजम्पशन, बराबर। अजम्पशन जो जोवुं होय तो पाछुं आपणे जोईए एकवार, so that will be more clear to you. See, here it is written, the transverse section which were plane before bending remains plane after bending. So that means there is no change in a neutral axis of beam. राइट, तो इसको हमने स्ट्रेन दे दिया, स्ट्रेन, राइट। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, दैट मींस स्ट्रेस इज इक्वल टू सी यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। when you are finding about bending stress, then it is bending strain upon bending stress, right। अगर बेंडिंग स्ट्रेस को आप हेड कर दो तो बचेगा क्या? स्ट्रेन इंटू ई, राइट। बेंडिंग स्ट्रेस को अगर आप हेड बना दो तो बचेगा क्या? स्ट्रेन इंटू ई। तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा? एफ अपॉन ई। स्ट्रेन बराबर क्या होगा? ये ई जो है वो नीचे चला जाएगा यहाँ से। आज ई छे, आ ई क्या हो जाए? आ नहीं नीचे हो जाए डिनोमिनेटर में। हाँ क्या ना ना भूल था अपने को क्या ना तो बोलो।
सी अगर हम E यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। ये जो है इसको मैं बेंडिंग स्ट्रेस बोलूंगा, इसलिए इसको मैं F लिया, सिर्फ डिनोटेशन F लिखा है, राइट। तो ये जो है वो अगर हमें स्ट्रेन को हेड बनाना है इसके अंदर, तो कैसे हेड बनेगा, वो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, देन व्हाट विल बी योर स्ट्रेन वैल्यू, F अपॉन E, राइट। तो यही तो मैंने वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट ऑन दी। Did you got this now? सिर्फ इसको इधर पुट ऑन दिया सर, दैट्स इट। और ये भी जो है न्यूट्रल एक्सिस वाला, राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो है न्यूट्रल एक्सिस वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू इसलिए किया क्योंकि इसका हमें हर एक एरिया पर न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लेयर जो है उसको ही अजम्पशन किया है, उसको ही अज्यूम किया है हमने, पूरा न्यूट्रल लेयर को ही अज्यूम किया है हमने। Now we consider a small layer PQ of beam section at distance y from neutral axis. See, ऊपर का जो है वो हम अभी आगे देखते हैं what it is, right? अगर इसको देखना है तो हम एक कंसीडर करेंगे एक स्ट्रिप को। ये जो स्ट्रिप है उसको हम कंसीडर करते हैं जो y डिस्टेंस के ऊपर है। फिर से हमने वही कंसीडर किया और कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो है वो हम एरिया लेंगे और एरिया जो है उसको क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। So this is your P and Q strip, right? ये आपका P और Q strip है। This is what it is. Consider for a beam section at a distance y from neutral axis. ये distance y के ऊपर है, ठीक है। और क्या रहेगा? Then this theta A, what it is? Area of your section, area of your strip, वो कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका एरिया जो है अगर कोई बोलेगा तो वो हम बोलेंगे इट इज डेल्टा A। अगर हम इसको फॉर्मुलेट करने जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारा कहां पर है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, यू कैन सी दिस, राइट। Are you able to see this equation number 3? This is your equation number 3, right? Now considering our equation number 3, हमने क्या है बेंडिंग स्ट्रेस को सिर्फ हेड बनाया है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसको इक्वेशन में हेड बनाया है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, इट वाज F अपॉन what it was, F upon what it was, F upon राइट। अगर आने हेड बनाइए कौन है आ स्ट्रेस में, तो आ भाई क्या हो जाए, ये हो जाए, ये यहाँ पर चला जाएगा। सिर्फ यही किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया, राइट राइट। इसको मैंने सिर्फ क्या किया, यहां से लेकर इसको यहां पर कर दिया। So now if we want to find out the total forces on this area, इस एरिया के ऊपर हमें अगर टोटल फोर्सेस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ अ एंटायर एरिया, क्योंकि ये क्या है हमें पर मीटर के लिए मिला है, पर मीटर स्क्वायर के लिए ये मिला है, हमें जो मिला है वो पर मीटर स्क्वायर के लिए है। अभी हमें क्या चाहिए, पूरे एरिया के लिए चाहिए, ये जो है वो क्या था पर मीटर था F, अभी हमें चाहिए कितना, तो बोलेंगे पूरे एरिया की स्ट्रिप के लिए चाहिए, એટલે આપણે પૂરા એરિયાની સ્ટ્રીપ માટે જોઈએ છે। તો શું કર્યું આપણે,
तो કે F into delta A એરિયા મલ્ટીપ્લાય કરી દીધું એટલે આખરી આપણે મળી જાય કે ફોર્સીસ કેટલા લાગે છે તો હવે F ની વેલ્યુ પુટ કરીએ F ની વેલ્યુ શું છે તો કે y into E upon R into delta A જરા બરાબર છે આટલું બરાબર હવે આનું આપણે મોમેન્ટ લઈએ ન્યુટ્રલ એક્સિસ ઉપર ક્યાં આપણે એની મોમેન્ટ લેવી છે ન્યુટ્રલ એક્સિસ ઉપર now we will take its moment at neutral axis moment अगर किसी चीज का हम लेंगे then what is the moment moment is equal to load into perpendicular distance अभी हम ले कहां से रहे हैं तो then we are taking it from neutral axis तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है राइट और आपका लेयर इधर है मतलब फोर्स जो है इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ y राइट तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ हमने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया राइट here what we have done we have just multiply it by the perpendicular distance तो ये क्या बना तो y into ये जो फॉर्मूला है राइट वो क्या मिला था हमें फोर्स का था तो फोर्स into perpendicular distance इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E upon R ये y जो है वो y स्क्वायर बन जाएगा और थीटा a will be L थीटा a Okay, now taking the algebraic sum of all such moment at neutral axis. अगर हम moment को देखते हैं तो यहाँ पर जो moment है वो क्या है E upon R, right? Y square upon theta A. इसको as it is इधर लिखा है, right? हमने कुछ और नहीं किया यहाँ पर. तो E upon जो R है, what E upon R into algebraic sum of Y square into theta A. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया the second moment of area right second moment of area this y square that means second moment and what does this mean area so this is a second moment of area that means it is what moment of inertia I so this is your moment of inertia I right so what I have done I have written it as a I then your formula is E upon R into I right then now what you can write down is this is your moment now taking a moment you can take this I over here E upon R is equal to what F upon E F upon Y right this is a pure bending equation M upon I is equal to F upon Y is equal to E upon R nothing I have done અને અહીંયા અહીંયા આ અહીંયાથી હતો એ અહીંયા ગયો બીજું કઈ નથી કર્યું તું સાચો છો કદાચ એમ લખતો હોય ઓકે so this is your pure bending equation and believe me this equation is the father of structure analysis if you want to understand the structure analysis then you need to understand this formula you need to mug up this formula M upon I is equal to F upon Y is equal to E upon R you can solve any numerical from entire structure analysis why because it contains M that is moment of inertia M that is your moment I that is your moment of inertia F what is F bending stress your bending stress is also being covered over here Y what is Y it is a distance from the neutral axis see here y distance from the external fiber of neutral axis extreme fiber of neutral axis now what is your E is a modulus of elasticity and R is equal to radius of curvature right
when it comes to this y is the distance from the neutral axis. That means it is calculating the distances also. Now when it comes to e, that means it is considering the property of material. Because what is e? Modulus of elasticity. When modulus of elasticity takes place, it is what? It is a stress upon strain. Now what kind of property is stress? Is it a physical property or chemical property? This is a physical property, right? When does the stress occur? And what will be the stress value for the different material? Value of stress for every different material will be different, right? And according to that stress, what has been generated into it, its strain will also change. Because if you take a wooden block, right, and compress it off, the displacement will be less, because after some time it will what happen? It will not get displaced. But if you take a sponge and do the displacement, what will happen? It will have some different value of displacement. Why? Because the materialistic property has been changed. So always understand that modulus of elasticity is actually the materialistic property of any material. Materialistic physical property of any material. So now what happens in this equation? Your moment is also taken I, that is moment of inertia. Now what do you understand by moment of inertia? What do you understand by moment of inertia? Don't give me the definition that second moment of the area is known as the moment of inertia. I know that definition. What do you understand by the moment of inertia? સર સંભળાતો નથી, નજીક આવો. Manan, I am asking you, what do you understand by moment of inertia? Don't tell me that moment of inertia is the second moment of an area, right? I know the definition, but what do you understand by moment of inertia? Do you have a scale? A steel scale? Anyone is having steel scale? Give me a plastic one also. That's okay. Okay. So if I want to show you the concept of moment of inertia, right? What I have done is I have taken a scale in my hand. I have scale, right? This is a scale. Can I consider this scale as a beam? Right? Now, if I apply a load over here, did anything happen? No. I'll change it. I'll change this axis. Now I have applied a load. What happened? The bending has been occurred over here. So this is your moment of inertia actually. What? It is your shape, resistance of moment. એનો મતલબ તમારો શું શેપ છે, એ શેપ ઉપરથી મોમેન્ટ કેટલી રેઝિસ્ટ થાય છે, that is your moment of inertia, right? It is purely a property that is considered with a shape, right? With a shape, with the length and depth of your structure. And when you include E over there, what happens? When you include E over there, what happens? It becomes a materialistic property too. તો એનો મતલબ કે તમે આજે ફોર્મ્યુલા ભણી, બરાબર? ઈ ફોર્મ્યુલા સ્ક્રીન નથી. હે શું કહે જાનો? સ્ક્રીન નથી એમ. ના ઈ આવે છે પ્રેઝન્ટ થઈ. તો તમે આ જે ફોર્મ્યુલા ભણી ઈ શું છે? It includes your what? It includes your shape property also. It includes your materialistic property also. It includes your moment also. It includes your radius of curvature after bending also. The distances also and the stresses also. So this formula is the father of structure according to me, right? It's not necessary that everyone should understand this, but according to me, it is an father of analysis. If you want to analyze anything,
You minimum required this formula, right? I think you should note down this from the figure itself, right? From here itself, and just try to understand it with your working, right? When you are writing it down, right? Try to understand what you are writing out. I have explained you again. If you it requires, I'll explain you again, right? But what is the main thing? You should understand this. If it's required, I'll again repeat this, right? I don't have any problem in that. But when you are once you are writing it out, see that you are getting a thing what you are writing out. Don't copy and paste it. Okay. Enough. That one.
This proof can be asked in your examination, not in this exam, but in your final exam. If it is asked about a proof for pure bending theory, then you need to do this. 8 marks. This could be your question for 8 mark, and this could be your question for final semester, right? It could be anywhere, but this could be a question. Okay, online people, when you complete it up till this, then you can leave after giving your attendance. Huh? સર તમારો લેક્ચર નથી 11 વાગે લગી No, no, Pratik sir. બધી What do you think?